What do you define as financial freedom? You're not working for money anymore. मेरे को प्लान करना है अपना रिटायरमेंट के लिए. I call these locks. So before you build a house of financial freedom, you need to buy these 3 locks. कहाँ पे करना चाहिए, कितना पैसा रोकना चाहिए, कहाँ पे? A very easy thumb rule is that whatever your monthly expenses, if you have 25 times of expenses, never lose your capital. And rule number 2, never forget rule number 1. Now the question that you asked, okay, which asset class I should choose. So my funda is very simple. वेलकम बैक. आज के पॉडकास्ट में आई एम टॉकिंग टू कपिल. कपिल इज अ सैलरीड पर्सन बट हैज़ मैनेज्ड टू अचीव अ कॉर्पस इन करोर्स. तो आज के एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट मनी हैबिट्स, वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस, हाउ यू कैन मेक देम इन योर लाइफ. आप क्या वो गलतियां अवॉइड कर सकते हो फॉर यू कि आप एक डेट ट्रैप में ना फंसो, कि आप अपना जो गोल है, फाइनेंशियल गोल है टू बी इन करोर्स, टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको अचीव कर पाओ. तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि कुछ सीख पाओ एंड अप्लाई कर पाओ अपनी लाइफ में. बिफोर बिगिन, मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बिकॉज यू नो दैट विल हेल्प यू ब्रिंग ऑन बिगर गेस्ट्स एंड हैव डीपर क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस फॉर यू गाइज, helping you achieve your goals. Awesome. I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. What do you define as financial freedom? So basically, financial freedom is a point where you realize that you're not working for money anymore, which means you work, but you work for your passion, you work for your area of interest, but the money is not the main motivation behind anything you do. And that is the time I think anyone can bring the best output from them in terms of productivity, in terms of the results that they can expect from a particular thing. So, did you have a certain number in your mind? So yeah, for me, there was a number. So ultimately, financial freedom for anyone can be as simple as that. Whatever your monthly or your annual expenses are, major expenses or a certain portion of your expenses, can be covered through the investment that you have created in different asset classes. So this amount can be very different, Sanskar, for you because your living style can be very different from me. So I think somebody can calculate this. A very easy thumb rule is that whatever your monthly expenses, if you have 25 times of expenses. For example, if my monthly expense is 1 lakh rupees and I'm able to create assets which are of worth 2.5 cr, and these assets should be something which should be very productive and able to give you good returns, then I think you should be at a point where you don't have to worry about your active income a lot. So, what do you say is a good return? So I think in India we should see it with the context of inflation. We all know that whatever RBI declares, the inflation is between 4 to 6%. For any calculation, we can go to a higher side because if we plan it little conservative, it will always be better. So let's take 6%. Right. So any asset which is giving you compounding return year on year return is 6%. If you go by SEBI definition, whatever they teach to investment advisors, so these are called productive assets which are giving you returns over inflation, right? Okay. This can as simple as be an FD which can give you 7 to 8%. Can as little if you go little ahead, it can be as good as real estate which can give you 7 to 8% or maybe 10%. Or it can be an equity mutual fund as well, which can give you around 12 to 15%. Or it could be direct stocks as well. If you're able to pick direct stock can create a very good amount of wealth. But again, with each asset class, there are some simple pros and cons, which somebody should be very careful while picking, because each asset class will not choose every investors, right? So you have to be very, very careful with each asset class. So let's say I'm a layman. मेरे को प्लान करना है अपना रिटायरमेंट के लिए. सो हाउ शुड आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स? कहाँ पे करना चाहिए, कितना पैसा रोकना चाहिए, कहाँ पे? So I think retirement is a goal that everyone should, this should be the first goal. But before retirement, and I see, and I maybe will little bit digress from the question that you asked. I think before that, anybody, maybe let's say a 25-year-old who is listening to this podcast, first of all, they need to understand whether they are at a position where they can call them secure or not. So they need to have a very good understanding of wherever they stand in terms of the insurances. I see a lot of youth today, young people who are like 20, 22s,
they will see a podcast or maybe a video on YouTube and they will immediately say that okay चलो SIP start करते हैं 5,000 रुपए की 3,000 रुपए की. That's not the right approach. I will not advise anybody. You don't start an SIP. First you need to understand that you have to be in a position जहाँ पे आपको risk transfer से फ़ायदा मिले. So insurance is nothing but a risk transfer mode. So you need to have a very good amount of insurance, an appropriate amount of term insurance, which is if God forbid something happens, people who are dependent on you or who will be dependent on you, let's say even if you're not married, but some point of time you will be married, you will have kids, right? You will have parents who will not be working because they will be retired at that particular time. So you will have a list of people who will be dependent on you. तो आपको उनको secure करने के लिए you need to have a term insurance. The best thing is that sooner you buy, better it for you. Second is medical insurance. We see a lot of article today, right, where we are saying 70% of Indians today are paying all of the medical expenses from their pocket. It's not a comfortable situation. Let's say I have built a corpus of 3 lakhs from the SIPs, listening to a podcast, listening to a video, right? Suddenly a medical emergency is in your way, right? And you will be losing all the corpus because आप कितने भी financially sound हो, किसी से भी आप एडवाइस ले रहे हो, देर आर सम एडवाइसेस विच आर नॉट प्रैक्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी इमोशनल फॉर माई फैमिली. इमेजिन अ सिचुएशन, संस्कार, दैट वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर इज हॉस्पिटलाइज इन अ हॉस्पिटल, राइट, एंड आई एम टेलिंग यू नो आपको SIP नहीं ब्रेक करना चाहिए, कंपाउंडिंग का ये फायदा होता है. विल यू बी इवन लिसनिंग टू दैट? It is very difficult, and that's how a lot of people fall behind. So before even you start investment, you need to have these 2 things. This is mandatory. Find a good term insurance, find a good health insurance. Then also you need to have a good emergency fund. So if we understand the landscape today, let's go back 30 years back. Our parents, how they were working, they will start their job in a particular organization and they will end their career with the same organization. आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अंकल से बात कीजिए सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन आज के टाइम में रिटायर हो चुके हैं, वो बताएंगे आपको उन्होंने अपना करियर यूको बैंक से शुरू किया और यूको बैंक पे ही खत्म कर दिया, राइट? लुक एट द जॉब लैंडस्केप टुडे, इट इज़ नॉट द सेम. यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरेज मे बी 2 years, कहीं कहीं जगह तो ये और भी टेन्योर कम हो गया है. सो योर जॉब इंस्टेबिलिटी हैज़ गॉन डाउन इन सिग्निफिकेंटली, राइट, फ्रॉम दैट टाइम. सो आपको एक कॉर्पस आपके पास रखना पड़ेगा जो कि एटलीस्ट मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम 12 months based on the risk appetite you assess for yourself. So based on that risk appetite, you need to have a good amount of emergency fund with you. I call these locks. So before you build a house of financial freedom, you need to buy these 3 locks, because without these locks, doesn't matter मेरा portfolio कितना है, I am on a mercy of an emergency. कोई भी emergency आती है, I will be losing the entire corpus. And I see this is the advice which is even lacking from the digital platform, because everyone is in a hurry. Everyone is in a hurry of a call to action. कि अच्छा मैंने आज सुना ये वाला म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, ये इस फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं. नो, जब आपने 3 चीज़ें अचीव कर ली, आई थिंक यू विल बी बेटर देन 90% ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट टुडे. यू विल बी डूइंग बेटर देन. आफ्टर दैट यू गो टू अ प्लानिंग जहाँ पे आप अपने गोल सेट कीजिए. स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स दैट यू लाइक मेंशन्ड इज रिटायरमेंट अमाउंट. यू अंडरस्टैंड दैट टुडे व्हाट इज़ माई लाइफ स्टाइल. आप इसको इन्फ्लेशन से प्रोजेक्ट कीजिए कि जब मैं 60 years का हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, राइट, माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दिल्ली यू कैन मे बी 85-90 आप लगा सकते हैं, राइट. देन यू सी कि मुझे कितने एक्सपेंसेस चाहिए होंगे. बेस्ड ऑन दैट यू स्टार्ट पुटिंग योर SIP. नाउ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि विच एसेट क्लास आई शुड चूज. So my funda is very simple, and I always like to believe it in making it very simple for people, because if it's not simple, people will not be able to understand and follow. Right. Anything which is beyond 5 to 7 years, in my understanding, should be an asset class which give you good returns. Their returns should be your priority. Keeping in mind, ऐसे asset class में आपको नहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पे वॉरेन बफे से दैट रूल नंबर 1, never lose your capital, and rule number 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1. तो रिटर्न के चक्कर में आपको किसी ऐसे एसेट क्लास को पिक नहीं कर लेना जहां पे आपका पैसा ही जीरो होने के चांसेस हैं, राइट. सो इफ वी लुक विच एसेट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, इट विल मोस्ट प्रॉब्ली कम एज इक्विटी. नाउ इक्विटी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन पिक अ डायरेक्ट स्टॉक. आज से 20 साल पहले जाते हैं, उस टाइम अगर हमारे पेरेंट्स को या फिर किसी को स्टॉक पिक करने होते, उस टाइम पे टॉप कंपनीज कौन सी थी? HMT, Lakshman Sylvania, a lot of companies which are not there at today.
तो अगर आज का कोई यंगस्टर अपनी रिटायरमेंट प्लान करना चाहे ऐसी किसी कंपनी और कोई बड़ी कंपनी पिक कर ले, यू कैन नॉट अश्योर दैट दोज कंपनीज विल बी आफ्टर देयर फॉर 20 years बिकॉज अवर टाइम इज चेंजिंग. हमें नहीं पता फ्यूचर में AI कंपनीज होंगी या फिर इंटरनेट कंपनीज होंगी. इंटरनेट का कैसा कैसी एक पिक्चराइजेशन या फिर कैसा एक स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, वी डोंट नो. इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, राइट. एनीवन कैन लुक वेरी इंटेलिजेंट एंड से कि मैं बता सकता हूँ, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गोइंग रॉन्ग वर्सेज मी गोइंग रॉन्ग इज इक्वल, राइट. So then in equity you have an asset class called mutual funds. And in mutual fund there are two types of mutual fund. One is active mutual fund where you hire somebody in terms of expense ratio and they pick a bunch of stocks with you. जब आप एक bunch of stocks pick करते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है कि कंपनी ए के होने के चांसेस हैं, बंद होने के चांसेस हैं, बी के हैं, सी के हैं, बट मेरा पूरा बास्केट बंद हो जाए उसके चांसेस बहुत कम हैं, तो आप अपना रिस्क रिड्यूस कर लेते हैं. In mutual fund, there is another asset class called passive investment, where you're not picking anybody, you're betting on Indian economy, which means you're buying index. Some of the popular index we can talk about is Nifty, which consists of top 50 companies of India based on their market cap, or maybe Sensex, which is a bucket of 30 companies based on the market cap. My suggestion to anybody, if they're planning their retirement, should be to go into this asset class which is called passive investment. If you see historical returns of passive mutual fund, they have done better than active mutual fund, a lot of mutual fund. Plus it also takes away the risk of reshifting. Today you pick a mutual fund, let's say मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, आपको मेरा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगा, आपने शायद मुझे इंटरनेट पर सुना, आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगी और मेरा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बट आफ्टर 3 years माई म्यूचुअल फंड स्टॉप परफॉर्मिंग. Then what you will do, you will have to shift and buy a new mutual fund. Same repeat after 3-4 years. तो इसमें एक तो आपको एक्टिव बहुत रहना पड़ेगा. You have to continuously monitoring how your mutual fund is doing. Whether in case of passive fund, you're betting on Indian economy. Because if we talk about the top 50 companies of India, they represent around 50 to 60% of the GDP of India. अगर आज हम 100 रुपये का सामान या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं इंडिया में, तो उसमें से 50 या 60 मुझे टॉप 50 कंपनीज देती हैं. दे आर वेल डाइवर्सिफाइड. अगर आप निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें अराउंड 30% हम फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं, इंफ्रा सेक्टर देखते हैं, हम देखते हैं उसके अंदर कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज भी हैं, FMCG कंपनीज भी हैं. सो दैट एंटायर बकेट इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड फॉर यू. एंड द एक्सपेंस रेशो which charges you pay technically to hold those funds as compared to active versus passive is completely different. For example, in active the charges could be as high as 2%, 1.8%, whether in passive fund this can go as low as 0.1%. तो जो आप ये difference है इसको भी compound कर रहे हैं and you don't have to change it every time. So whatever wealth I have built over a period of time, most of my wealth in form of my goal setting is coming from mutual funds only. तो सिर्फ आपका शायद रिटायरमेंट गोल नहीं होना चाहिए. इवन इफ यू आर यंग, रिटायरमेंट, देन स्टार्ट सेविंग फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन बिकॉज दीज आर योर मेजर गोल्स, राइट. Start saving for your child marriage, start saving for any major goal that maybe you have to buy a car after 10 years, 20 years. You can also start saving for that. Once your goals are done and you still have some surplus money left, then I think you should start learning to how to pick a good stock. Because ultimately that skill you need to acquire. बट ये बहुत ईजी नहीं है. बट किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में करना एक नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए बहुत आसान है. सो वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं फॉर अ नो नथिंग इन्वेस्टर हु इज नॉट एक्टिव इन द मार्केट, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आई थिंक इंडेक्स फंड्स आर द बेस्ट फॉर्म दैट दे कैन इन्वेस्ट एंड बिल्ड अ गुड वेल्थ देयर.